बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 44th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का लेक्चर नए टॉपिक से शुरू होगा। आइए देखते हैं। डिसाइडेबिलिटी एंड एग्जाम्पल्स। आपको याद होगा कि रेगुलर लैंग्वेजेस के सिलसिले में हम डिस्कस कर आए हैं कि whether language is empty. If we express certain language by regular expression, we can check whether the language is empty, and we can check the finiteness of language. We can check whether a string belong to certain language or not. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो इस वक्त जो टॉपिक है दैट इज डिसाइडेबिलिटी, वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग with respect to context free languages. आइए इसको तफसील से देखते हैं। Following are the decidable problems with respect to context free grammar. Number 1, whether or not the given CFG generates any word. This is a problem of emptiness of CFL. Number 2, whether or not the given CFG generates the finite language. The problem of finiteness. Whether or not the given string W can be generated by the given CFG. This is the problem of membership. Following are the algorithms showing that the answers to the above three questions are yes. Algorithm 1, emptiness. If the given CFG contains a production of the form S is equal to null string, then obviously the corresponding CFL is not empty. If the CFG contains the production of the form S is to T, where T is terminal or string of terminals, then T is a word of corresponding CFL and CFL is not empty. If the CFG contains no such production, then number 1, for each non-terminal n with n is to T, pick one production for n if there are more than one, and replace n by T in the right side of each production wherever it lies. Remove all such productions from the CFG. Doing so, the CFG will be changed. It will generate at least one word of the old CFL. Dear students, इस टेक्निक में आपको बताया जा रहा है कि if the given CFG does not contain the production we have discussed earlier, which directly basically provides us information whether the language contain null string or not. तो इस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि हमने ऐसी प्रोडक्शंस पिक कर रही हैं विच हैव राइट हैंड साइड आइदर टर्मिनल और स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स. सो वेरेवर दे अकर सच नॉन टर्मिनल विल बी रिप्लेसिंग बाय दोज एंड विल बी रिमूविंग ऑल सच नॉन टर्मिनल फ्रॉम द ग्रामर. और नेक्स्ट क्या करेंगे आइए देखते हैं. सेकेंड स्टेप, रिपीट द प्रोसेस until either it eliminates S or no new terminal is eliminated. If S has been eliminated, then CFG generates some words, otherwise not. Following is an example. The following is CFG. आप देख रहे हैं कि S is to AB, A is to B S B, B is to double C, C is to double S, A is to A is to B, C is to B, C is to double B. So, the step 1 is picking A is equal to A and C is equal to B. It can be written as S is to AB, A is to BSB, A is to double B, B is to double S, B is to double B, C is to double S. Students, यहाँ हमने उन प्रोडक्शंस को पिक किया जिसका जिक्र किया था और जहाँ जहाँ वो राइट साइड पर अकर कर रही थी उनको रिप्लेस कर दिया और उन तमाम प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया जिनमें वो एग्जिस्ट कर रही थी. सो द रिजल्टेंट फॉर्म ऑफ द CFG यू हैव ऑलरेडी सीन. आइए मज़ीद देखते हैं. स्टेप 1 स्टिल कंटिन्यूज, पिकिंग B is to double B and A is to double B. It can be written as S is to A double B, A is to double B S double B, B is to double A S and C is to double S. Make sure that we are eliminating those productions containing
the non-terminal of the type non-terminal is to terminal और string of terminal, जिनको हम replace करते हैं उनको ग्रामर से रिमूव भी कर देते हैं ऐसे प्रोडक्शंस को जो उन नॉन टर्मिनल्स को कंटेन करती हैं. Since S is to A double B has been obtained, so A double B is a word in the corresponding CFL. To determine whether the non-terminal X is ever used in the derivation of word from the given CFG, following algorithm is used. Algorithm 2, we call this uselessness. Number 1, find all unproductive non-terminals. The non-terminal is unproductive if it cannot produce a string of terminals. Eliminate all productions involving unproductive non-terminals. Paint all x's blue. Students, हमने unproductive non-terminals को पिक किया और जहाँ जहाँ जिन प्रोडक्शंस में वो एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर दिया. और ये जहन में रहे कि अनप्रोडक्टिव से मुराद द नॉन टर्मिनल विच डज नॉट लीड टू एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल. ये जहन में रहे कि कुछ स्ट्रिंग्स हम एस से जनरेट कर लेते हैं और कुछ स्ट्रिंग हम किसी नॉन टर्मिनल से भी जनरेट कर सकते हैं. तो हम नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं, उसी को सामने रख के हम ऐसे नॉन टर्मिनल को पिक करेंगे और जिन जिन प्रोडक्शन में वो आ रहे होंगे उनको रिमूव कर देंगे. नंबर 4, इफ़ एनी नॉन टर्मिनल इज़ लेफ्ट in the left side of the production with any blue non terminal in the right side, paint that non terminal blue and paint that non terminal blue at all occurrence of it throughout the grammar. Students, जिस नॉन टर्मिनल को चेक करना है उसको मार्क किया, ब्लू मार्क किया है और वो जिन प्रोडक्शंस के राइट साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है उनके कॉरस्पॉन्ड नॉन टर्मिनल्स को भी मार्क कर लेना है और वो नॉन टर्मिनल थ्रू आउट द ग्रामर जहाँ भी एग्जिस्ट करेंगे उनको भी ब्लू मार्क करना है. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस ऑफ पेंटिंग और मार्किंग नॉन टर्मिनल्स. आइए मज़ीद देखते हैं. स्टेप 5, रिपीट स्टेप 4 until no new non terminal is painted. Number 6, if S is blue then X is useful member of CFG, otherwise not. There is example. Consider the following CFG: S is to capital A B A, B capital A Z B, A is to X B, A is to B Z A, B is to B double A, X is to A Z A triple A, Z is to Z A B A. To determine whether X is ever used to generate some words, unproductive non terminals are determined. Z is unproductive non terminal. So, eliminating the productions involving Z, हमने उनको eliminate कर दिया. We have purified the grammar from this non terminal Z and we are left with these productions: S is to A B A, S is to B, A is to X B, B is to B double A, X is to triple A. X is blue, so A is blue because X lies on the right side of the production starting from A. Thus, B and S are also blue. Since S is blue, so X can be used to generate certain word from the given CFG. Students, अभी हम देख रहे थे कि the non terminal X can generate is helpful in generating certain word or not, और उसकी टेक्निक आपने देखी कि किस तरह से हमने उसको पिक किया और अनप्रोडक्टिव नॉन टर्मिनल्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी तमाम जहाँ जहाँ भी जिन प्रोडक्शन में एग्जिस्ट करते हैं हम उनको रिमूव कर दिया. एक्स को हमने पेंट किया एंड वी पेंटेड एक्स on the right side of all production wherever it exists, and we also painted the non terminal on left hand side corresponding to X as well. And then keeping in view those non terminal which are newly painted, we painted again the non terminal corresponding to which the right hand side the new non terminal occurs, and if S is painted then X is supposed to be helpful in generating certain word, and we observed that S was painted and hence we claimed that X is helpful or useful. If it is not, then we say there is a problem of uselessness. Anyway, आइए आगे चलते हैं. There is a note. It may be noted
that a non-terminal is called useless if it cannot be used in a production of some word. Following algorithm is used to determine whether the given CFG generates the finite language or not. Algorithm 3, finiteness. So, there are so many steps. Let us start step 1, determine all useless non-terminals and eliminate all productions involving these non-terminals. Students, useless non-terminals determine करने के लिए हमें पिछली एल्गोरिदम का सहारा लेना पड़ेगा और तमाम non-terminals को determine करने के बाद ये फैसला कर सकेंगे कि which terminals are useless, और वो terminals जिन प्रोडक्शन में एग्जिस्ट करते होंगे उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग नॉन टर्मिनल्स डिटरमिन वेदर दे आर सेल्फ एम्बेडेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. स्टॉप इफ अ सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल इज डिस्कवर्ड. ये सेल्फ एम्बेडेड हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ टेक्निक सिखाई जा रही है हाउ टू आइडेंटिफाई सेल्फ एम्बेडेड non-terminals. Now, to test whether X is self-embedded, these are the steps. Number A, change all X on the left side of the productions into Greek letter psi. This is capital Greek letter psi, and keep all X on the right hand side as such. हमने left hand side पे आप ये देख रहे हैं कि जितने X जिनको हमने चेक करना है नॉन टर्मिनल डेफिनेटली दे विल दैट विल लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, उनको ग्रीक लेटर कैपिटल साई से रिप्लेस किया और राइट साइड पर एज सच रहने दिया. तो बेसिकली वी आर रिप्लेसिंग एक्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस. नंबर 2, पेंट ऑल एक्स ब्लू. नंबर C, if y is any non terminal on the left hand side of the production with X in the right hand side of that production, then paint y blue as well. Students, ये टेक्निक पिछली एल्गोरिदम में भी हमने देखी थी कि हमने X राइट साइड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको पेंट किया है जिन जहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, और जिन प्रोडक्शंस में राइट साइड पर आ रहे हैं उन प्रोडक्शंस के लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल को पेंट कर दिया गया. ये सिमिलर प्रोसेस है जो हमने गुज़श्ता एल्गोरिदम में देखा. नाउ सी वट एवर टू डू नेक्स्ट. आइए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं. स्टेप D, रिपीट स्टेप C अंटिल नो न्यू नॉन टर्मिनल इज पेंटेड. अब डेफिनेटली वो नॉन टर्मिनल जिन नॉन टर्मिनल्स प्रोडक्शंस की राइट साइड पर आ रहे थे उनके कोरस्पॉन्ड हमने लेफ्ट साइड वाले नॉन टर्मिनल को भी पेंट किया था, एंड द प्रोसेस वाज कंटिन्यूड. सो इन स्टेप D वी क्लेम दैट रिपीट द प्रोसेस of step C until no new non terminal is painted. If capital psi is painted, then X is self embedded, otherwise not. तो ये तो फैसला हुआ किसी भी नॉन टर्मिनल को चेक करने का कि whether the non terminal is self embedded or not. Step 3, if any non terminal left in the grammar after step 1 is self embedded, the language generated is infinite, otherwise not, or otherwise finite. Students, आपको याद होगा कि सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल को मैंने आपको एक ग्रामर के दौरान बताया था, और वहाँ इसकी डेफिनेशन ये थी कि इन अ डेरिवेशन ट्री इफ़ दैट नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट इन द डाउनवर्ड पार्ट, डिसेंडेंट पार्ट में अगर आ रहा है, और आपको याद होगा कि मैंने ट्राइंगल्स बनाकर आपको बताई थी कि वी कैन रिपीट द प्रोडक्शन सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस इन द गिवन ट्राइंगल, और वो रिपीट हो रही थी बार बार जब पंपिंग लमा की बात हमने की थी उससे पहले. तो वहाँ भी वो सेल्फ एम्बेडेडनेस की वजह से हम उस जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही थी उसके कुछ पार्ट को हम पंप कर रहे थे, एंड वी कैन पंप दैट पार्ट एज मेनी टाइम एज यू विश. और इसी वजह से ये ऐसे ही है जैसे किसी लैंग्वेज में सर्किट एग्जिस्ट करता हो. FA की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ अगर आप किसी स्ट्रिंग को रन करना चाहें और उसके दरमियान में सर्किट आ जाए तो डेफिनेटली यू कैन लूप दैट सर्किट एज मनी टाइम एज यू विश, एंड दैट लैंग्वेज मे जनरेट इन्फिनिट, दैट FA मे जनरेट एक्सेप्ट इन्फिनिट लैंग्वेज. तो इसी तरह यहाँ भी हम ग्रामर के हवाले से बात कर रहे हैं. इफ़ वी ऑब्जर्व सर्टन नॉन टर्मिनल टू बी सेल्फ एम्बेडेड, we can repeat that non terminal
as many times as we wish, and hence the language will be infinite. If we cannot observe any self embedded non terminal, the language will not definitely be infinite. आइए मज़ीद डिस्कशन देख लेते हैं. So, there is an example. Consider the following CFG: S is to A B A, S is to B A Z, S is to B. A is to X B, A is to B Z A, B is to B A A, X is to A Z A, X is to B A, X is to triple A, Z is to Z A B A. Here is a non terminal, Z is useless, while all other are used in the derivation of some words. So, eliminating the productions involving Z, we are left with S is to A B A B, A is to X B, B is to B double A, X is to B A, X is to triple A. Now, starting with non terminal X, no, we are going to check whether this non terminal X is self embedded or not. हमने यहाँ से start किया है. Replacing X on the left hand side of the productions by psi. We have only one production having X on left hand side. So, we are replacing that by psi. So, we will be having S is to A B A, S is to B, A is to X B, B is to B double A, psi is to B A, psi is to triple A, because we have two productions for capital X. So, both are replaced by capital psi. Now, X is blue, so A is blue and so psi is blue. ये आप जो प्रोडक्शन हमने अभी पहले लिखी हैं उनको सामने रखकर देख सकते हैं. ब्लू मार्क करने के बारे में आपको बता चुका हूँ. स्टूडेंट्स, ये ब्लू मार्क करने की टेक्निक बड़ी सिंपल है कि जिस साइड पर X आ रहा है, जिन जिन प्रोडक्शंस में राइट साइड पर X आ रहा था, आपको याद होगा कि बताया गया था कि हम उसको ब्लू मार्क करेंगे और उनके कॉरस्पॉन्ड जो नॉन टर्मिनल लेफ़्ट साइड पर आएंगे उनको भी ब्लू मार्क कर देंगे. अब ये जो नए नॉन टर्मिनल ब्लू हो गए, ये जिन प्रोडक्शंस के राइट साइड पर आएंगे उनको फर्दर हम ब्लू मार्क कर देंगे और उनके कॉरस्पॉन्ड जो लेफ़्ट साइड पर नॉन टर्मिनल है उनको भी ब्लू मार्क कर देंगे. तो इस तरह से हम ये क्लेम करेंगे X के बारे में, इफ़ X इज़ पेंटेड देन X विल बी सेल्फ एम्बेडेड, अदरवाइज नॉट. तो ये प्रोसेस एग्जांपल के ज़रिए हम देख रहे हैं. आइए मज़ीद देखते हैं. सिंस A इज़ ब्लू, सो B इज़ ब्लू एंड सो S इज़ ब्लू. सिंस psi इज़ ब्लू, सो X इज़ सेल्फ एम्बेडेड. यहाँ हमने किसी भी नॉन टर्मिनल को सेल्फ एम्बेडेड चेक करने के लिए उसकी रिप्लेसमेंट को ब्लू देखने हैं. अगर वो ब्लू होगा तो उसके कॉरस्पॉन्ड जो नॉन टर्मिनल है X, दैट विल बी सेल्फ एम्बेडेड एंड हैंस द CFG generates the infinite language. To determine whether a string is generated by the given CFG, following algorithm is used. Algorithm 4, the CYK algorithm. This algorithm was invented by John Koch and later was published by Tandoy Kasami and Daniel H. Younger. इन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर लिए गए. So, we abbreviated this CYK algorithm. So, step 1 is convert the given CFG in CNF. Number 2, let the string X under consideration has the form X is equal to X1, X2, X3 up to Xn, where all Xi's may not be different. List all the non terminals in the given CFG, say S, N1, N2 and so on. Number 3, list the non terminal that generates single letter substrings of X. Students, हमारा टारगेट ये है, किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना चाह रहे हैं कि whether that string can be generated by the given CFG or is the part of corresponding CFL or the member of corresponding CFL. तो उसके लिए टेक्निक बताई जा रही है. उसके जो लेटर्स उसमें आ रहे हैं स्ट्रिंग के, उनको हमने लेबल कर दिया है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड इन जनरल दे मे नॉट बी डिफरेंट, तो उनमें वो रिपीट भी हो सकते हैं. और उसके बाद तमाम नॉन टर्मिनल्स को लिस्ट कर लिया गया है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन लिस्टिंग ऑल प्रोड्यूसिंग नॉन टर्मिनल. आपको पता है कि कुछ नॉन टर्मिनल कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते.
तो प्रोडक्टिव नॉन टर्मिनल्स की बात की जा रही है और सिस्टमेटिकली ये टेबल बनेगा। पहले हम सिंगल लेटर वाले तमाम टर्मिनल्स के कॉरस्पॉन्ड ऑल प्रोड्यूसिंग नॉन टर्मिनल लिखेंगे, फिर 2 लेटर्स की कम्बिनेशन लिखेंगे, फिर 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह का ये सिलसिला जारी होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी नॉन टर्मिनल के बारे में ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि whether this non-terminal produces that string or not. So, it is very simple that if we start from that non-terminal, we end up in the given string, then the corresponding non-terminal will be productive, otherwise non-productive or unproductive। और producing non-terminal की हमने बात की है, तो आइए टेबल देखते हैं। Step 3 is list the non-terminals that generate single letter substrings of x। अब x की जितनी possible single letter substrings बनती थी वो आप देख रहे हैं कि x1, x2, x3 up to xn, और दूसरी साइड पर we just suppose that these are the non-terminal which produce these single letter substring। तो ये डमी आपको नॉन टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। बेसिकली दे मे बी मोर देन 1 इन नंबर। यहाँ डॉट्स का n के बाद डॉट्स ये जाहिर कर रही है कि दे मे बी मोर देन 1, एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल उन लेटर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिस्ट the non-terminal that generates substring of length 2, that is we have the substring। अब जो हमने string लिखी थी that was x1, x2, x3 up to xn, तो इनकी possible arrangement आप देखें कि sequence का भी ख्याल रखना है। we cannot change the order। ये नहीं है कि x1 x2 के बाद x2 x1 लिख दें, that will never become a substring of the given string। So, keeping in view that the sequence should be such that it must be the substring of given string, we are writing all possibilities। तो पहली possibility में मैंने x1 x2 रखा है और दूसरी तरफ we again suppose that n is the non terminal producing this x1 x2 string substring, और it may be more than 1, इसलिए dots भी दिखाई दे रहे हैं। The next is x2 x3, again we suppose there is a non terminal n and so on, and the next is x3 x4, and the last string xn minus 1 xn is the substring of length 2, and the corresponding producing non terminal we are writing n dots, और dots का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि these non terminal may be more than 1 in number। Students, हम systematically substrings लिए जा रहे हैं given string के एतबार से, और जो restriction है that's on the length of substring। First of all we took all possible substring of length 1, then of length 2. The next target is to consider all possible substrings of the given string of length 3 and their corresponding non terminal producing non terminal जो उनको generate कर सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। Similarly, the list of non terminals generating substrings of x of length 3, substring x1, x2, x3 all producing non terminal n dots, it again means that the non terminal producing this substring may be more than 1. The next is x2, x3, x4, again corresponding non terminal we are writing n dots, and dot mean it may be more than 1 non terminals. And lastly x minus 2, x minus 1, x n is a string of length 3 which is a substring of the given string, and the corresponding producing non terminal we are writing n dots, and n dots mean we may have more than 1 producing non terminals. Continuing the process, the non terminal that generate x1, x2, x3 up to xn. Now, we are increasing the length of substring and ultimately will be ending up the given string which is to be tested. So, this can be determined as substring x1, x2, x3 up to xn all producing non terminals n and dots. Again it means that we may have more than 1 non terminals generating this string. Students, आपने देखा कि गिवन स्ट्रिंग के हमने लेटर वाइज पार्ट्स कर लिए और सिस्टमेटिकली उनकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स की लिस्ट बनाई, तमाम पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स की, starting with the substring of length 1, then 2, then 3 and continuing up to the length n, mean the string itself. और दूसरी तरफ उनके correspond all producing non terminals की list बना दी. Now, we have all possible non terminal that can generate
the substring of the given string of length 1, then 2, then 3 and up to n. और claim अभी देख लेते हैं कि what is the condition the ultimate answer. आइए देखते हैं. If S is among the set of all producing non-terminals, then X is generated by the CFG, otherwise not. There is an example. Consider the following CFG in CNF. S is to AA, A is to AA, A is to A. Let X is equal to triple A. To determine whether X can be generated from the given CFG, let X is equal to x 1, x 2, x 3, where x 1 equal to x 2 equal to x 3 equal to A. Students, इस example में, which is very simple and is in CNF, we have taken a known example. Triple A can be checked that it can be derived from the given CFG, लेकिन जिस मेथड को जब भी हम चेक किया जाता है किसी एल्गोरिदम को, उसको नोन एग्जाम्पल पे हम टेस्ट करते हैं. वी नो दैट ट्रिपल ए कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल, सो वी आर टेस्टिंग दिस. आइए इसको देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू CYK एल्गोरिदम, द लिस्ट ऑफ नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूसिंग सिंगल लेटर डबल लेटर सबस्ट्रिंग ऑफ X एंड द स्ट्रिंग X इटसेल्फ, क्योंकि ट्रिपल लेटर में खुद आ जाएगी, can be determined as follows. X 1 which is A, all producing non terminals की लिस्ट में हम A देख रहे हैं, कैपिटल A. X 2 which is again A, capital A can produce it. X 3 which is again A, capital A can produce it. X 1 X 2 which is basically double A, S and A can produce this substring. Then X 2 X 3 which is again double A, S and A can produce this substring, and lastly X which is equal to X 1, X 2, X 3 which is triple A. The non terminal that can produce this string is S and A, ये दोनों इसको produce कर सकते हैं. Since S is in the list of producing non terminals, so triple A can be generated by the given CFG. Dear students, अभी हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स विद एग्जांपल्स डिस्कस किए, जिसमें किसी CFL के बारे में वेदर दिस इज़ एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, एम्प्टीनेस की बात की, और उसके बाद हमने फाइनाइटनेस की बात की, यूजलेसनेस ऑफ नॉन टर्मिनल उसका एल्गोरिदम चेक किया, और लास्टली वेदर स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड बाय द गिवन CFG और अ पार्ट ऑफ CFL. इनकी डिफरेंट टेक्निक्स हमने डिस्कस की along with their examples. So, the next thing is a word can be generated in different ways और उनकी different parsing trees हम बना सकते हैं. तो parsing techniques के हवाले से हम बात करना चाहेंगे. So, let us discuss parsing techniques with examples. आइए देख लेते हैं. Parsing techniques. Recall the CFG of arithmetic expression which was S is to S plus S, S is to S star S, S is to number underline. आपको याद होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम पहले भी डिस्कस कराएं. It was observed that the word 3 plus 4 multiplied by 5 or star 5 created ambiguity by considering its value either 23 or 35, because this string can be generated in two different ways and can give two different values. आपको याद होगा, और इसी की वजह से हमने उसको ambiguous CFG कहा था. So, to remove this ambiguity, the CFG was modified to S is to bracket S plus S bracket close, S is to bracket S star S bracket close, or S is to number. There arises a question that whether a new CFG can be defined without having parentheses with operators branches, that is star before plus, plus से पहले हम star को operate करते हैं. The answer is yes. Following is the required plus times grammar. Plus mean इसमें दो ऑपरेशन है, and times mean multiplication, plus mean plus or addition, times mean multiplication.
So, this is the name of grammar, and the grammar is S is to E, S is to E is to T plus E, T is to T, then T is to F star T, T is to F, F is to bracket E bracket close, and F is to I, where I stands for any identifier that is number or of storage location name variable. Following is the derivation of I plus I star I. स्टूडेंट्स अभी जो ग्रामर आपको बताई गई दैट्स प्लस टाइम्स, तो बेसिकली इसका नाम ही प्लस मीन एडिशन एंड टाइम्स मीन मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशंस के को लेकर चल रही है, एंड आवर टारगेट इज़ दैट मल्टीप्लिकेशन शुड परफॉर्म बिफोर एडिशन इज़ परफॉर्म्ड. तो इसको सामने रखते हुए अभी हम देखेंगे कि वेदर इट वर्क्स. और एक स्ट्रिंग अभी हमने ली है आई प्लस आई स्टार आई, इसको हम इसकी डेरिवेशन देखना चाह रहे हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं. द फर्स्ट प्रोडक्शन इज एस इज टू ई, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, वी हैव नो अदर ऑप्शन, यहीं से स्टार्ट करेंगे. एंड देन ई इज रिप्लेस्ड बाय टी प्लस ई, एंड देन टी इज रिप्लेस्ड बाय एफ. सो दिस इज लाइक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. आप देख रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल टी को हमने यहाँ रिप्लेस किया. इन द नेक्स्ट स्टेप f is replaced by I and E is as such, so we have I plus E. So again we replace the leftmost non-terminal, and the next is the non-terminal to be replaced is E, which is replaced by T in the next step, and hence we can have I plus T. In the next step T is replaced by F star T, and we have I plus F star T. In the next step the leftmost non-terminal, which is F, is replaced, and which is replaced by I. So, we can have I plus I star T. Now, T is replaced by F, we can see I plus I star F, and lastly F is replaced by I, and hence we can have I plus I star I. Parsing of word. So, there is definition: the process of finding the derivation of word generated by the particular grammar is called parsing. There are different parsing techniques containing the following three. Number 1, top down parsing. Number 2, bottom up parsing. Number 3, parsing technique for particular grammar of arithmetic expression. Dear students, अभी parsing techniques की बात की और आपको बताया कि the process of derivation of certain word from the given CFG is called parsing, and there are different parsing techniques. So, we will be first discussing top down parsing. तो आइए top down parsing के बारे में देख लेते हैं. Top down parsing, following is an example showing top down parsing technique. Example is: consider plus times grammar and a word I plus I star I. So, we have taken the same grammar and the same word to be tested for this technique. So, as can be observed from the name of top down parsing, the parsing starts from the non-terminal S, and the structure is similar to that of total language tree is developed. So, the structure which is developed is similar to total language tree, not total language. The branches of the tree are extended till the required word is found as a branch. Students, इस टेक्निक में ये जो बताई जा रही है आपको, इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है विच इज़ लाइक टोटल लैंग्वेज ट्री. यू नो, इट्स नॉट सम टाइम पॉसिबल दैट यू कैन शो द होल टोटल लैंग्वेज ट्री, स्पेशली इन केस ऑफ इन्फिनिट लैंग्वेज. आपको याद होगा कि मैंने एक स्टेज पर आपको टोटल लैंग्वेज ट्री की बात बताई थी, जिसमें हम उसको एक्सटेंड करते चले जा रहे थे, और यहाँ भी उसी को सामने रखते हुए बात की जा रही है. तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्ट्रक्चर लाइक टोटल लैंग्वेज ट्री. पूरा टोटल लैंग्वेज ट्री हम नहीं बनाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट वाइज दैट वी फर्स्ट बिल्ड द टोटल लैंग्वेज ट्री एंड देन ऑब्जर्व वेदर द गिवन वर्ड कैन बी ड्राइव फ्रॉम दिस ट्री और नॉट. सो दिस इज नॉट वाइज. आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं. Some unwanted branches, the branches that do not lead to the required word, are dropped.
For the word I plus I star I, the total language tree can be started as, आप देख रहे हैं कि S is to E, we have no other option, एक ही प्रोडक्शन S के लिए, वो आप उसी तरह से देख रहे हैं. Now there are two production for E, E is to T plus E and E is T, ये दो ब्रांचेस भी आपने देख ली. Then you can observe that T is replaced by F star T and T can be replaced by F. दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमने लेफ्ट ब्रांच की लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को दोनों पॉसिबिलिटीज़ दी हैं. सो इफ़ यू रिप्लेस T by F star T, so the branch become F star T plus E. The first in the lowest row, ये आप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं, इसकी ब्रांच आ गई. The next is we are replacing T by F and hence we get the branch F plus E. ये मैंने T plus E की ब्रांचेस की हैं और T को रिप्लेस किया है बारी बारी F star T से और F से. The next branch is T and there are two possibilities, one is F star T, the other is F. वो दोनों ब्रांचेस आपने देख ली हैं, which can further be extended to. अब आप देख रहे हैं कि ये जो दो ब्रांचेस हमने लिखी थी, 4 ब्रांचेस रादर, एक हमने T प्लस E के लिए 2 ब्रांचेस लिखी थी और 2 हमने T के लिए लिखी थी. तो ये ट्री इसी तरह से आपको कॉपी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्दर वी आर एक्चुअली हैविंग 2 ब्रांचेस ईच फॉर ईच नोड ऑफ द प्रीवियस ट्री, और उसके लिए भी हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का ही ख्याल रखते हुए हम रिप्लेस करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले जो डायग्राम दिखाई गई उसमें तमाम पॉसिबल प्रोडक्शंस को यूज़ कर लिया गया था और हमने S को E से रिप्लेस किया, E की फर्दर 2 ब्रांचेज ली और दोनों में हमने लेफ्ट मोस्ट सिर्फ नॉन टर्मिनल को रिप्लेस किया है. मेक श्योर इन द फर्स्ट पार्ट E वाज टेकन एज सच. तो जो ब्रांच हमें मिली थी थर्ड लेवल पे, उस थर्ड लेवल के वर्किंग स्ट्रिंग की लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल की दोनों पॉसिबिलिटीज़ को रिप्लेस करके 2 ब्रांचेस बनाई थी. इसी तरह से जो सेकंड ब्रांच थी उसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ थी और वो एक ही नॉन टर्मिनल था, उसके दोनों ब्रांचेस हमने शो कर दी. So in the next step again we will be having 4 working strings and in each working string we will be replacing the leftmost non-terminal by its possible replacement. आइए उसको देख लेते हैं. तो ये थर्ड लेवल के बाद रादर फोर्थ लेवल, मैं फर्स्ट लेवल S को कहूँगा, सेकंड लेवल E को कहूँगा, थर्ड लेवल T plus E and T, and fourth level becomes F star T plus E, F plus E, F star T, F. ये फोर्थ लेवल है इस ट्री का. नाउ वी आर एक्सटेंडिंग दिस ट्री टू फिफ्थ लेवल. अब जो आपको फर्स्ट ब्रांच एट फोर्थ लेवल नज़र आ रही, दैट्स F star T plus E. सो विल बी रिप्लेसिंग द फर्स्ट द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल विच इज़ F, और उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम रिप्लेस करेंगे. पहली पॉसिबिलिटीज़ है F इज़ टू ब्रैकेट E ब्रैकेट और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है F इज़ टू I. आप देख रहे हैं कि इसकी दोनों ब्रांचेस में हमने यही किया है. फर्स्ट में हमने ब्रैकेट E ब्रैकेट से रिप्लेस किया और सेकंड में I से. सो हैंस वी गॉट 2 ब्रांचेस, ब्रैकेट E ब्रैकेट स्टार T प्लस E, then I star T plus E. This is branch 2, and the next node is F plus E at fourth level, और again the leftmost non terminal is F, और F की replacement हम उसी तरह बारी बारी ब्रैकेट E ब्रैकेट और I दे रहे हैं, and we are getting the branches 3 and 4 which are ब्रैकेट E ब्रैकेट plus E आप यहाँ देख सकेंगे, और दूसरे में I plus E which is fourth branch. At the same level 4 we have still 2 branches, और दोनों को एक ब्रांच में F star T है, उसके F को रिप्लेस किया जाएगा बारी बारी, और फिर दूसरी ब्रांच एंड ओनली F है दैट हैज़ अगेन 2 ब्रांचेस, तो उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है in terms of 5, 6, 7, 8. So in 5 we will be having bracket E bracket star T, in 6 I star T, और उसमें 7 में ब्रैकेट E ब्रैकेट और 8 में ओनली I. ये ब्रांचेस हमने फर्दर एक्सटेंड कर दी. नाउ ड्रॉपिंग द अनवांटेड ब्रांचेस 1, 3, 5, 7 एंड 8. स्टूडेंट्स, अनवांटेड ब्रांचेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ. सिंस दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल
ऐसी ब्रांच जिसमें अनवांटेड टर्मिनल्स आ रहे हैं। डेफिनेटली जब आप ब्रांच को एक्सटेंड करेंगे तो टर्मिनल रिप्लेस नहीं होते, विल बी देयर, और इस तरह से अगर अनवांटेड टर्मिनल उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो जो आपका एग्जैक्ट जो स्ट्रिंग है जो उसमें वो टर्मिनल आ ही नहीं रहे, सो डेफिनेटली दैट विल नॉट लीड टू अ टारगेट, सो दैट ब्रांच शुड बी ड्रॉप्ड। इसी तरह से इफ़ द ब्रांच वर्किंग स्ट्रिंग हैव मोर अनवांटेड नॉन टर्मिनल, मसलन अगर आपके स्ट्रिंग की लेंथ 5 है जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं एंड यू हैव एन योर वर्किंग स्ट्रिंग सपोज 6 नॉन टर्मिनल, so it will generate the string of minimum length of 6 which is not required, so that may also be dropped। और इसी तरह से आप देख सकते हैं बाज़ औक़ात हमने जो स्ट्रिंग जनरेट कर रही है वो दैट्स i plus i star i, so we have 1 plus 1 star, so any branch that lead us to 2 plus or 2 star again will not be helping, so keeping in views all these things will be dropping the unwanted branches। तो ये प्रैक्टिस से आप उसको देख सकेंगे कि how do we call the branch to be unwanted which lead to some unwanted string। आइए मज़ीद देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस नई डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने अनवांटेड ब्रांचेस को सिर्फ ड्रॉप किया है और जो बाकी ब्रांचेस रह गई हैं उनको उसी तरह से दिखा दिया। तो यहाँ आप इसके जो तमाम लेवल देख रहे हैं, S is the first level, E is second level, then third level is T plus E, T, and fourth level is F star T plus E, F plus E, F star T, and fifth level is the same I star T plus E, I plus E, and I star T. Since first two letters in branches 2 and 6, अब 2 और 6 के first two letter अगर आप देखें तो I star दोनों में आ रहा है, are not that in I plus I star I, तो ये again they are producing unwanted terminal, so 2 and 6 can be dropped and using leftmost derivation of non terminal T is replaced as, वो उनको हमने ड्रॉप कर दिया और लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल T आ रहा है हमारी इस लेवल पर जो आपको दिखाया जा रहा था I प्लस T प्लस E में, और I प्लस T जो दूसरी ब्रांच है उसमें तो एक ही नॉन टर्मिनल है विच इज़ द लेफ्ट मोस्ट एज वेल, तो T की पॉसिबल रिप्लेसमेंट आपको नेक्स्ट लेवल में एट ब्रांच 9, 10, 11 और 12 दिखाई जा रही है। सो रिप्लेसिंग T बाय F स्टार T वी गेट branch 9 which is I plus F star T plus E, and at branch 10 we are replacing T by F, so it becomes I plus F star plus E, इसमें दो प्लस आ गए। और इसी तरह से T की जो नेक्स्ट नोड है उसकी रिप्लेसमेंट आप 11 और 12 में देख सकते हैं। सो रिप्लेसिंग T by F star T will be having I plus F star T, and at 12 we are replacing T by F, so we are getting I plus F. Since 9 gives more than 5 letters and 10 contains 2 plus, so 9 and 10 are dropped and leftmost non-terminal F is replaced as, ये हमने उनको ड्रॉप कर दिया। और again we are extending our tree at the next level, तो आप देख सकते हैं लेवल S is to E, E is to T plus E, and then F plus E, the next level is I plus E, the next level is I plus T, the next level is I plus F star T, and the next level is I plus F. Students, अभी आपने जो मैंने ज़िक्र किया अनवांटेड ब्रांचेस का, उनको न सिर्फ ड्रॉप किया है इस डायग्राम में जिसको हम देख रहे हैं, बल्कि उन नोड से को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, रिप्लेसिंग द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल बाय द पॉसिबल रिप्लेसमेंट। ये जहन में रहे कि टोटल लैंग्वेज ट्री में वर्किंग स्ट्रिंग के तमाम नॉन टर्मिनल को तमाम पॉसिबल प्रोडक्शन से रिप्लेस किया जाता है। हम ऐसा नहीं कर रहे। इफ़ अ वर्किंग स्ट्रिंग कंटेन more than one non terminal, we are just replacing the leftmost non terminal by its all possibilities, and then if the resultant branch is useful we are keeping, otherwise we are dropping। और ड्रॉप करने की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताई। आइए इस ट्री को एक्सटेंड करते हुए देख लेते हैं। सो एट दिस लेवल वेयर वी हैव 2 branches I plus F star T
एंड i प्लस f। ये आप देख सकते हैं कि पहली बार जो i प्लस t को ब्रांच दी गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नाउ वी कैन हैव अगेन टू ब्रांचेस, f इज़ रिप्लेस्ड बाय आइदर ब्रैकेट e ब्रैकेट और i। इनकी दोनों रिप्लेसमेंट आप ब्रांच 13 और 14 में देख सकते हैं, which becomes I plus bracket E bracket star T, and replacing f by I will be having I plus I star T, which is branch 14. The next node which is to be extended is I plus f। लेफ्ट में आप देख रहे हैं उसकी दो ब्रांचेज हैं 15 and 16। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर f अगेन, ब्रैकेट e ब्रैकेट और I, इन दोनों को आप रिप्लेस करता हुआ 15 16 में देख सकते हैं, which becomes I plus bracket e bracket and 16 become I plus I. Now 13, 15 and 16 are again unwanted, so it can be written as। Students, इससे पहले कि बाद वाली डायग्राम दिखाई जाए, मैं ये बताता चलूँ कि इन तमाम स्टेप्स में हमने अनवांटेड ब्रांचेस का जिक्र किया। मुझे उम्मीद है कि आप अनवांटेड ब्रांच को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सटेंड आवर ट्री अननेसेसरीली। अगर गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाते चले जाएंगे सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में ट्री को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेन ट्री इज़ एक्सटेंडेड और हर स्टेज पे आप उसको एक्सटेंड करते चले जाएं, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द सिचुएशन। तो फॉर्चुनेटली जो स्ट्रिंग हमने ली उसके केस में बहुत सी ब्रांचेस ड्रॉप होती चली गई, अदरवाइज़ अगर उन सब में पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती इसको ड्राइव करने की, सो इट वुड हैव वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। एनीवे, आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। ड्रॉप करने के बाद जो सिचुएशन है उस स्लाइड को देखते हैं। सो S is to E, E is to T plus E, and then this is extended to F plus E, further extended to I plus E, further extended to I plus T, further extended to I plus F star T, further extended to I plus I star T. Now T has two possibilities, F star T and F। इनकी दोनों possibilities आप इसकी branches में देख रहे हैं, and we have two branches further. The first become I plus I star F star T, second become I plus I star F. Now we are not extended the first one. आप देख रहे हैं कि उसमें दो स्टार आ रहे हैं तो उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर रहे, जबकि I प्लस I स्टार F को एक्सटेंड कर रहे हैं विद द पॉसिबिलिटीज़। F की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ब्रैकेट E ब्रैकेट और जस्ट I। इन दोनों की रिप्लेसमेंट से वी कैन हैव द लोएस्ट मोस्ट द लोएस्ट ब्रांचेस यू कैन सी, और वो हैं I प्लस I स्टार ब्रैकेट E and I plus I star I. Now the above tree confirms the required derivation. ये जो हमने ट्री बनाया था इसको इस डेरिवेशन से मैच कर सकते हैं, which is the same, S is to E, the next implies T plus E, we are replacing E by T plus E, then T is replaced by F and we are getting F plus E. Now F is replaced by I and we are getting I plus E. The next step E is replaced by T, we are getting I plus T. The next T is replaced by F star T and we are getting I plus F star T. The next we are getting I plus I star T because F is replaced by I, and then T is replaced by F and we are getting I plus I star F, and lastly F is replaced by I and we are getting I plus I star I. We have a note. It can be noted that bottom up parsing can be determined similar to that of top down parsing, with the change that in this case the process is started with a given string and the tree is extended till S is obtained. So this process is similar and we can derive any string using this technique. Dear students, इससे पेशतर के आज का लेक्चर ख़त्म पज़ीर हो, मैं चाहूँगा कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। समिंग अप टुडेज़ लेक्चर, बेसिकली हमने स्टार्ट किया था विद डिफरेंट क्वेश्चंस
और डिफरेंट प्रॉब्लम्स की बात की थी। हमारा जो टॉपिक था आज का वो डिसाइडेबिलिटी से रिलेटेड था, और डिसाइडेबिलिटी हम इससे पहले भी कॉन्टेक्स्ट फ्री रेगुलर लैंग्वेजेस के सिलसिले में कर आए हैं, और आपको याद होगा कि वहाँ भी हमने ये डिस्कस किया था कि वेदर रेगुलर एक्सप्रेशन और एन एफ एक्सेप्ट सर्टन स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट सर्टन स्ट्रिंग। तो वहाँ भी हमने एम्प्टीनेस की बात की थी और फाइनाइटनेस की बात भी की थी कि वेदर अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट्स फाइनाइट लैंग्वेज और गिवन एफ एक्सेप्ट फाइनाइट लैंग्वेज। और वहाँ भी हमने ये किसी स्ट्रिंग के बारे में चेक किया था कि वेदर अ स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड बाय द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन और नॉट, और अ स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड बाय गिवन एफ। तो इसी किस्म का क्वेश्चन हम अब यहाँ करना चाह रहे हैं, और हमें देखना चाह रहे थे कि वेदर विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज उसकी बात हो रही है कि कैन वी डिटर्मिन विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दैट इट जनरेट्स द लैंग्वेज विच इज़ नॉन एम्प्टी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वेदर द गिवन CFG जनरेट्स द लैंग्वेज विच इज़ नॉन एम्प्टी। हमने इसके बारे में डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि वेदर द गिवन CFG जनरेट्स फाइनाइट लैंग्वेज और वेदर अ गिवन स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड बाय द गिवन CFG, इनको डिस्कस किया। मैं इस सिलसिले में बताता चलूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेदर द गिवन CFG जनरेट्स नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। उस सिलसिले में आपको बताया गया कि इफ़ द CFG जनरेट्स contains a production of type non-terminal is to null string, it means that especially S is to null string. ये अगर हमारे पास एक string production उसमें मौजूद हो, so it means that the null string is a part of that language, hence the language is non-empty. इसी तरह से ये भी चेक किया जा सकता है कि there are some nullable productions, और अगर वो S से लिंक होकर चल सकें तो तब भी null string जनरेट हो जाती है। So the third was if we have production of type S is to string of terminals, even then that string of terminal will be a word of that language, and we can check that the given CFG generates non-empty language. Students, हमने एक टेक्निक बताई और उस सिलसिले में ये था कि we will be picking the productions with left hand side to be non-terminal and right hand side to be T, और T को हमने ये क्लेम किया था कि that was the string of terminals and will be picking one, we may have more than one. तो इस किस्म के प्रोडक्शंस में से नॉन टर्मिनल को पिक कर लेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन वेयर एवर दे अकर, और तमाम इसकी प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे और विल बी कंटिन्यूइंग द प्रोसेस। और इस तरह से रिप्लेसमेंट के बाद non terminal will be eliminated one by one, and lastly we claim that if S is eliminated or no new non terminal is eliminated, we will be stopping the process at that stage. So if S is eliminated, it means that this generates certain word and the corresponding language is non empty. उसके बाद हमने डिस्कस किया था whether the language generated by CFG is finite, और finite के सिलसिले में हमने ये कहा था कि if there exists a non terminal which is self embedded, और self embedded की मैंने आपको बात बताई कि ये self embedded non terminal हम पहले भी ट्री की फॉर्म में देख चुके थे, जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताया था कि ट्राइंगल्स कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस which are repeated in the next step. So if we repeat that triangle in the next step, triangle of sequence of production, we will be pumping द जनरेटेड वर्ड। पंपिंग लेमा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी उसी को ही सामने रखा गया है कि इफ़ वी कैन ऑब्जर्व वन सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल then it can be used as many times as you wish, and hence will be having infinite many words in that language, and the language will contain infinite word, that is infinite language. So the last one was whether the given string can be generated by the given CFG, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल भी ली, और आखिर में हमने पार्सिंग टेक्निक्स की बात की और हमने बताया कि पार्सिंग मीन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन ऑफ certain word, and there we discussed we claim there are 3 techniques, और उनमें से एक टेक्निक को बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया, that was
टॉप डाउन पार्सिंग, और उसके लिए हमने स्पेशली एक ग्रामर का सहारा लिया एंड दैट वाज प्लस टाइम्स ग्रामर। एंड आपको याद होगा कि इससे पहले हम ग्रामर डिस्कस कर चुके थे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए, और उसमें एम्बिग्यूटी क्रिएट हो चुकी थी, और उसको रिमूव करने के लिए हमने क्लेम किया दैट द प्लस टाइम्स ग्रामर डज नॉट क्रिएट एनी एम्बिग्यूटी। और स्पेशली उस ग्रामर से एक वर्ड हमने जनरेट किया यूजिंग टॉप डाउन पार्सिंग, एंड द वर्ड वाज I plus I star I। स्टूडेंट्स, टेक्निक के मुताबिक डेफिनेटली वी स्टार्टेड फ्रॉम द ओनली वन प्रोडक्शन S is to E। हमने एग्जांपल को ही सामने रखा और उसी के साथ साथ मैंने आपको टेक्निक सिखाई कि वी हैड ओनली वन प्रोडक्शन फॉर S is to E, और E की फर्दर जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने ब्रांचिंग शुरू कर दी। और ब्रांचेस के बाद वर्किंग स्ट्रिंग्स में मैंने ये आपको बताया था कि दिस प्रोसेस विल बी लाइक टोटल लैंग्वेज ट्री, लेकिन उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। टोटल लैंग्वेज ट्री में हम हर वर्किंग स्ट्रिंग पर हर टर्मिनल के लिए उसकी रिप्लेसमेंट लेते हैं। यहाँ हम लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल की पॉसिबल रिप्लेसमेंट लेंगे, और हर स्टेप पर अनवांटेड ब्रांचेस को हमने ड्रॉप किया था। और अनवांटेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी तमाम ब्रांचेस जिनमें या तो कोई इस किस्म के टर्मिनल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो गिवन स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, या दे मे क्रिएट मोर देन द नंबर ऑफ टर्मिनल्स विच आर मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्मिनल इन द गिवन स्ट्रिंग, उनको भी हमने रिमूव किया था। इसी तरह हमने स्पेशली जो एग्जांपल ली थी I प्लस I स्टार I, उनके डेरिवेशन में उसके जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे, तो हर स्टेज पर हमने वर्किंग स्ट्रिंग के सिर्फ लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को पॉसिबल रिप्लेसमेंट के साथ रिप्लेस किया था। एंड एट ईच स्टेप वी ड्रॉप द अनवांटेड ब्रांचेस, और मैंने अनवांटेड ब्रांचेस की तफसील आपको बता दी थी कि उससे पता चल जाता है कि दीज ब्रांचेस डू नॉट लीड अस टू द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। और अल्टीमेटली मैंने लास्ट आपको उसका स्टेप दिखाया था, लास्ट डायग्राम आपने देख ली थी, और फॉर्चुनेटली हमें फ़ायदा हो गया कि इस प्रोसेस के दौरान बहुत सी ब्रांचेस ड्रॉप करनी पड़ गई और उससे ट्री सिंपल हो गया। अदरवाइज़ इतना लेंथी ट्री अगर हम बनाना शुरू कर देते और तमाम ब्रांचेस को इंक्लूड करते, सो इट वुड हैव बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो इस मेथड से आपको टॉप डाउन पार्सिंग की टेक्निक बताई गई, एग्जांपल भी एक दी गई, और मैंने आपको बताया कि बॉटम अप पार्सिंग भी इसी तरह से की जा सकती विद द चेंज दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग एंड विल बी एक्सटेंडिंग द ट्री अप टू until we get the non terminal S। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।